Assalamu alaikum students. Welcome to the online lecture series of artificial intelligence. This is our 13th lecture. I hope you are fine and enjoying these video lectures of AI. I am Muhammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education, Lahore. So in our previous lecture we talked about the A star search and we solved a roadmap problem by using this search technique. So, and for this search technique, we use the heuristic. We use the function f of x, which is equal to g of x plus h of x. H of x is the heuristic value, and g of x is the cost to reach from initial state to node x. So, in the same way, we talked about that the A star search is an optimal search if the heuristic value is admissible. So this search technique is also a complete search technique. So what is the search? Complete search and optimal search and admissibility. We discussed these concepts in our previous videos. So we also talked about in our previous lecture that the A star search is a well-known form of best first search, which allow us to revise our decisions as well as it use the priority queue. And at the end of that lecture, at the end of previous lecture, we talked about the concept of admissibility as well as the consistency. So in this video we will solve this problem, 8 puzzle problem using heuristic. So just look at this problem. We talked about this problem in our previous lectures when we are covering the problem solving topic. So the initial state is here. There are total 9 boxes and the 8 tiles. Each tile have 1 digit from 1 to 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 8. So in the same way the goal state is here. So just the difference is the difference between these two states is the arrangement of these tiles. So in our initial state the 1 tile is here. In our goal state the tile 1 is here. In our initial state the tile 2 is here. In our goal state the tile 2 is here. So the we want to move this initial state to goal state, and this is our problem. And the rule is we can move this empty tile, empty box from this location to right direction. In the same way we can move this empty box from this side to left and up and down. So these 4 are our set of actions. So we cannot move this empty diagonal, empty box towards the diagonal direction. So हम इसको diagonal की तरफ move नहीं कर सकते. So we can move only these 4 directions. So this is our initial state and this is our goal state. Now in this lecture we are going to cover this problem. We are going to solve this problem by using the heuristic. So in our book there are 2 different ways to calculate the heuristic values. So आप बुक को भी जरा देखें, साथ साथ उसको पढ़ते रहा करें क्योंकि बुक रीडिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. So there are 2 different ways to calculate the heuristic values. First is the number of misplaced tiles as compared to our goal state. So just look at this, that the heuristic value of this initial state by using this method. The first method to calculate the heuristic value is 8. So how can we calculate? Just इसको दोबारा देखें कि किस तरह से कि number of misplaced tile. 1 is here, but in our goal state the 1 is here. So tile 1 is misplaced. In the same way just look at this 2. हमारे पास initial state में यहाँ पे है लेकिन goal state पे इस जगह पे होना चाहिए था जहाँ पे अभी 4 है initial state में. So the tile 2 is also misplaced. In the same way the tile 3 is also misplaced. Just look at this initial state and the goal state location of this tile. So in the same way 4 भी हमारे पास misplaced है. 4, 5 is also
misplaced. So in the same way आठों की आठों हमारे पास जो है वो misplaced हैं. So the heuristic value, that's why the heuristic value of this initial state, this start state, by using this method h1, the heuristic value is 8. But this is an important point, that the h1 is admissible heuristic. So admissible heuristic का हमने बात भी की थी. अगर A स्टार सर्च के थ्रू हम इसको अगर सॉल्व करने जाते हैं, सो द A स्टार सर्च के लिए हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक होना चाहिए. सो द H1 इज एन एडमिसिबल heuristic because it is clear that any tile that is out of place must be moved at least once. So at least एक दफ़ा जो है वो मूव करेगी, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा ही मूवमेंट करनी पड़ेगी एक्चुअल में. तो हमारे पास जो है ये ओवर एस्टिमेटेड नहीं है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो ये हमारे पास एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक बन जाएगा. सो द सेकंड वे टू कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, दैट द h2 is equal to the sum of the distances of the tiles from their goal positions. So just look at this again, read this line again, that the second way to calculate the heuristic value is the sum of the distances of the tiles from their goal positions. So how can we calculate the distance? We will use the Manhattan distance. So just look at the heuristic value, that h2 mean for this initial state, for this start state, the heuristic value is 18 by using this method. So मैं अब इसको देखूंगा कि किस तरह से 3 किस तरह से वैल्यू आई, 1 किस तरह से आती है, 2 किस तरह से आती है. इन द सेम वे ये सारी की सारी वैल्यूज किस तरह से आती हैं बाय यूजिंग द मैनहट्टन डिस्टेंस. तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. सो जस्ट लुक एट दिस वैल्यू 3. सो दिस इज फॉर टाइल 1. सो just look at this, in our initial state 1 is here, but in our goal state, so the tile is here. So हम किस तरह से लेंगे, किस तरह से हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. So we can move from this state to at this state, then we will move toward this state. In the same way we will move towards this state. So ये हमारे पास 3 उसको क्या करेगा, कवर करेगा, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू 3 आ गई. इन द सेम वे फॉर 2. सो जस्ट लुक एट दिस 2. सो हमारे पास 2 किस तरह से आया, क्योंकि 2 की जो डिस्टेंस है वो क्या है, अपने एक्चुअल टाइल से गोल के साथ अगर कंपेयर करें तो वो 1 है. सो द वैल्यू फॉर 2 इज 1. इन द सेम वे जस्ट मुझे गैस करके बताएं कि ये 2 जो मैंने अभी हाईलाइट किया ये किसके लिए होगा. सो this value is for tile 3. So 3, just look at this point कि हम इस तरह से इसका डिस्टेंस नहीं ले सकते. We cannot calculate this distance by using the diagonal direction. So we can move this tile from this location to at this location. In the same way will move this tile from this location to that location. So हमारे पास जो total difference है that is 2. So यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया. In the same way for the tile 8, so the actual distance, actual location for this tile is here, but in our initial state the tile is here. We can move this tile at this direction at this location. In the same way we can move this tile from this location to this location. So the distance between for this tile 8 is 2. तो जस्ट 2 लोकेशंस का डिफरेंस है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यू 2 आती है. जस्ट एड अप ऑल ऑफ दीज वैल्यूज. सो दिस इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर आवर इनिशियल स्टेट फॉर दिस स्टेट. सो जस्ट लुक एट this value. This is the heuristic value for our initial state to reach goal state. How can we calculate? We can calculate by using the Manhattan distance. So इस slide के अंदर we covered the 2 different methodologies to calculate the heuristic values, and the first is the number of misplaced tiles, and in the same way the second method to calculate the heuristic value is the sum of distances of the tiles from their goal positions. So we can calculate these distances by using the Manhattan distance. So now I will solve this problem.
by using the heuristic values. So मैं एक ऐसी प्रॉब्लम लेता हूँ जिसकी मैं just I will change the initial state as well as our goal state because this is a very lengthy problem that if we want to solve this problem. So just I will change the initial state and the goal state. In the same way I will pick that initial state and the goal state, जिसमें से हम क्या करेंगे, ये दोनों ही एक किस्म का उसके अंदर मिक्सअप होके ये इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंस जो डिस्टेंस है उसका वो 1 ही होता है। उसको जस्ट आप मिसप्लेस कह लें या उसको आप डिस्टेंस, उसका मिनहटन डिस्टेंस कह लें, वो दोनों ही सेम उसकी वैल्यूज आएंगी। सो जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम दैट आई हैव चेंज द इनिशियल स्टेट एज वेल एज द गोल स्टेट। सो दिस इज आवर इनिशियल स्टेट and 1 2 3 4 6 7 5 8. So just look at this arrangement, and in the same way the final state is 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is our final state. So initial state, final state, what is the set of action? We can move this empty box in upward direction, in the same way down, left and right. So agar kisi bhi, if any problem have initial state, final state and set of action, we can say that the problem is a well defined problem. So agar isme तीनों चीजें well defined problem होती हैं हमारे पास. So just look at the heuristic value. So in our initial state 4 is here, but in our goal state 4 is here. So in the same way in our in our initial state the 5 is here, but in our goal state the 5 is here. In the same way the 8 मैंने just उसको bold कर दिए जो कि misplaced हुए हैं, या just you can take the second method कि हमने just उसको Manhattan distance ले लें या just misplaced की बात कर लें. So दोनों के लिए हमारे पास जो है वो heuristic value क्या आएगी. So एक दोनों के लिए हमारे पास 3 वैल्यू आएगी. जस्ट मैंने एक ही तीर के साथ दोनों शिकार किए हैं कि दोनों तरीकों से आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करने का जो है ना वो एग्जांपल एक बता रहा हूँ. सो जस्ट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 3 फॉर दिस इनिशियल स्टेट टू रीच आवर गोल स्टेट. सो देन आई विल अप्लाई द ऑल ऑफ दीज सेट ऑफ एक्शंस in at this initial state, and the initial state I will consider this initial state as a root node, as a root state. So I will apply the action up. So just look at this this state, and this in the same way I will apply the right action. In the same way I will apply the down action. So मैंने एक एक्शन अप्लाई नहीं किया, और क्यों नहीं अप्लाई किया जस्ट मुझे बताएं, गेस करें ज़रा. क्योंकि मैंने एक लेफ्ट मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस तरफ हम मूव भी नहीं कर सकते. तो अगर मूव करेंगे भी तो क्या है कि वो यही स्टेट हमें जनरेट होगी. तो मैंने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया. सो जस्ट लुक एट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू फॉर दिस स्टेट. सो 1 is misplaced as we can see in our goal state. I just write the final state over here. So जो कि हमें क्या करे कि हम इजीली हम अंडरस्टैंड कर सके कि हमारी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू किस तरह से आ रही है. So the 4 is here in this state. 4 is also misplaced in this state. So 5 is also not the 5 tile 5 is not at goal state. जिस तरह से हमारे पास गोल होना चाहिए 5 का, उस तरह से नहीं है. In the same way the tile 8 is not at their actual location as provided in our final state. So all of these 4 nodes, so जो भी मेरे पास क्या है कि misplaced हुई है, मैंने उनको क्या कर दिया, bold कर दिया. So the value of heuristic is 4. So once again आप दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर लें heuristic value by using the Manhattan distance and also by using the misplaced tiles. So दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 आएगी. In the same way by applying the right action, so this empty box will move at this direction. So just look at this point that 1 2 3 4 5 4 6 and 7. So all of these nodes all of these tiles are
जो कि हमारे पास क्या है कि उस लोकेशन पे हैं, एट दैट लोकेशन which is required in our final state, but the 5 and 8 tiles are not at their actual location as required in our final state. So इसको again आप क्या करेंगे, इसका heuristic value कैलकुलेट करेंगे इनकी. So the heuristic value will be 2 by using both methods as we discussed in our previous slide. By using this method, the number of misplaced tiles, and the second method is the sum of distances of the tiles from their goal position. So in the same way you can calculate this the heuristic value for this state. So 7 जो है वो भी हमारे पास क्या है, एक्चुअल लोकेशन पे नहीं है. In the same way 4, 5 and 8. So the heuristic value for this state is 4. So the heuristic value for this state 4, 2 and 4. So मैं किस डायरेक्शन की तरफ निकलूंगा? So I will pick this node because the heuristic value is 2. So this state claims that if I move from this initial state to that state, so मेरे next 2 steps के अंदर क्या है कि मेरे पास जो है वो goal मेरे पास आ जाएगा. So then I will apply these all of these set of actions up, down, left and right at this state. So just look at this slide. I apply all of these actions, right, down, left and up on this state. So when I apply the right action on this state, so just look at this, the box move at this direction. So then I will calculate the heuristic value again. So the heuristic value for this node is 3. In the same way when I apply the down direction action, so ये 5 क्या हो गया, अब ऊपर की तरफ चला गया और 5 जो empty box है वो नीचे आ गया. So at this for this state the heuristic value is 1 because only one tile is not at their actual location as required in goal state. So in the same way the heuristic value for this this state is 3 and for this state is 3. So just मैंने क्या कर दिया, इनको बोल्ड कर दिया. आप इनको क्या कर सकते हैं, गोल के साथ कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 is not at the actual location as required in our goal state. In the same way 5 and 8, all of these are not at their actual locations as required in our goal state. So the heuristic value, up I will select one node to move to visit the next state. So मैं किसको visit करूँगा, किसको select करूँगा to visit करने के लिए? Then I will pick the that node which have lowest value of heuristic. So because that node will claim कि आपका जो path है वो minimum है goal तक पहुँचने का, अगर मैं उसको pick करता हूँ. So just look at these 4 nodes. So I will pick this node. So मैं इसको node को pick करने के बाद then I will apply all of set of actions on at this node at this state. So just look at the next slide कि हमने क्या किया कि इसके ऊपर जैसे ही मैं set of action लगाता हूँ अपना कौन से वाला left वाला. So I will apply the action left. So क्या हो जाएगा कि 8 जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगा. So just look at this problem that this state, so which is equivalent to our final state. So the path is path हमारे पास क्या है, तो हम पहले इसके ऊपर right action apply करेंगे, then we will apply the down action and then we will apply the left action. So then we can achieve our goal state. So to reach this is our path from initial state to goal state. So इस तरह से आप अपने heuristic values को calculate करते हुए क्या है कि अपनी initial state क्या है कि किसी भी problem को आप इस तरह से आप कोई भी function आप बना सकते हैं heuristic value का, कि heuristic value का आप किस तरह से function पहले decide करें और वो function हमारे पास उस तरह ऐसा होना चाहिए जो कि admissible heuristic हमें return करे. आप उस heuristic को use करते हुए अपने initial state से goal state तक आप पहुंच सकते हैं.
So in this video lecture, we solve this 8 puzzle problem by using the heuristic values. Basically, the purpose of this lecture is how can we use heuristic function, how can we generate heuristic function. So I have generated these two heuristic functions, heuristic values, heuristic. There are two different ways to calculate the heuristic value for this problem. In the same way, you can use any heuristic function. You can generate any heuristic function according to your problem. So you can then you should apply that heuristic function, that heuristic value on your problem, on your states. So I hope आप इस तरह से अगर किसी को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो होना शुरू हो जाएगा सॉल्व अच्छे तरीके से, और कम से कम या अच्छे से अच्छा आपको जो पाथ हमें रिटर्न होगा वो इस प्रॉब्लम के थ्रू, इस heuristic values के थ्रू आना शुरू हो जाएगा. So this is the end of third chapter according to this book, Artificial Intelligence, a Modern Approach. I will suggest कि इस बुक को आप परचेज कर लें. अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है तो आप इसको सॉफ्ट फॉर्म में ले लें, जो कि मैं सॉफ्ट फॉर्म में इसको आप जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे लेक्चर्स होते हैं आप उनको वहाँ से पढ़ना शुरू कर दें. So inshallah we will start the fourth chapter, which is about the local search technique, in our next video. So if you have any question about this lecture or about our previous lectures, so you can send me an email. Inshallah I will reply your question. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.